Virtual University. So so other who could not attend this workshop can also benefit with this session. So hope everything is clear. Just raise a hand if we can start. Yeah, thank you, Anas. Let's start with some poll. Very interesting poll. I will launch. Go to your poll section. I want to see what is your preference in the language. So I'm launching the poll. Just go to the poll section, and I would like everyone to uh, answer and submit which language you prefer for this session. You can see the poll on your screen. Just select any of one answer and just click on submit. Which language you prefer? Is it best if we go in Hindi or Urdu, or it is good to have only session in English, or any one of above is okay for you? Okay, so far we have got 8 responses. Very good. 9 responses. 10 responses. Okay. All right, so we have got 11 responses now. Very good. So we have 16, 17 attendees, and we have got 11 responses. I would like the remaining attendees to submit their responses as soon as possible so we can conclude this. 11 responses so far. Anyone want to submit in the polls? Anyone missed? I see 7 attendees and 11 responses only. Very good, 12 responses. Okay, let's conclude. So you can see here on my screen 12 responses, 33% only Hindi, and 8% only English. That's mix, and 58% above 58% is any of above language. That's cool. So I'm worried on the part only English. So I believe uh, more is the request for Hindi or any of the language. So we'll go and mix this session with Hindi and English. Okay, that's cool. We'll mix the session together with Hindi. We'll try to manage this session in Hindi, Hindi or Urdu, you can say, and we'll try to make it as much easy as possible to everyone to understand it, because this is about your career. This is about your future. So we want to make you understand the complete stuff very well so you can take your decision. Let's close these polls. We have got 12 responses, and we will conclude. We have already concluded that we will launch this
session in mix. We'll more talk in Hindi and less in English. Okay. Uh, Fine. 1 minute. Okay. Let's raise another poll. Uh, what is one best word you could describe your mood? Let's raise another poll very quickly. Describe your describe one word which is your current mood. Like I'm saying my mood is excited. I've submitted the excited word. Let's see the responses. Anybody? Anyone? What is your mood? You can type anything like Roman English also. आप टाइप करना चाहते हो हिंदी में उर्दू में कुछ लिखना चाहते हो तो लिख ले. आपका मूड कैसा है सिर्फ वन वर्ड में डिस्क्राइब करना है. टू रिस्पॉन्सेस. टू रिस्पॉन्सेस. कोई और है जो मूड अपना शेयर करना चाहता है? थ्री रिस्पॉन्सेस. वेरी गुड. Excited, all excited. Very good. So it is repeated. Normal. Cool. So you're feeling normal. Very good. Reason. Cool. Mustaqim Kazi. I think he has pasted in the chat. So I would request Mustaqim to in the poll. I think he pasted interested. 5 responses. Let's have at least 10 responses so we can close this poll. What is your mood, guys? कैसा mood है आपका आज? Quickly. Excited again. 4 responses की जरूरत है हमारे को अभी. Four more, 4 more. Anybody? Anyone who want to put their mood in the words in single word? एक सिंगल वर्ड क्या डिस्क्राइब करता है हिंदी में? गुड. माशाल्लाह. 7 responses. 3 more. Anyone? Excited to learn. Very good. दो और रिस्पॉन्सेस चाहिए. 10 रिस्पॉन्सेस. हमारे पास कितने अटेंडीज है? 17 अटेंडीज है. 8 रिस्पॉन्सेस मिले हैं अभी तक. लेट्स गेट 2 more responses. Anyone? 2 more responses. Excited again. 1 more. 9 responses. 1 more.
11 responses. Excited to learn. Very good. So we'll close this. Okay. Eager to learn. Para responses. Very good. So this is our response. As you can see on my screen, most six respondents are excited. One is normal, Python, pleasant, eager to learn, excited to learn. Very good. So our start is good. Let's start. Let's start our session. So uh, I hope everybody is seeing. Everybody is able to see my screen. Uh, and we'll start it from here. This poll session is very important to make the session interactive, so everybody is, not feeling sleepy or bored. We need to make this interactive. That's why we are running these polls and question and answer sessions. So let's start. So what is the agenda for today? We will learn what is Python programming language. We are not talking about the Python snake here. अजदा जो रहता है या सांप की बात नहीं कर रहे हम लोग. पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड वी आर हियर टू लर्न पाइथन प्रोग्रामिंग, नॉट अबाउट some snakes and animal. Here we are learning. We want to see what is the Python and why it is popular. पाइथन लैंग्वेज पॉपुलर क्यों है? क्या पाइथन पाइथन ये क्या चीज है? पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. और ये पॉपुलर क्यों है आजकल के तारीख में, आज आज के सेशन में ये इतनी ज्यादा पॉपुलर क्यों लैंग्वेज है? हम लोग ये भी देखेंगे कि डिमांड एंड सप्लाई कैसी है पाइथन की. पाइथन प्रोग्रामर्स की जो डिमांड एंड सप्लाई है वो कैसी है, वो भी देखेंगे हम लोग यहाँ पे. व्हाट इज द डिमांड, सप्लाई, एंड व्हाट इज द सैलरी. सैलरी जो है वो बेसिकली डिराइव करती है डिमांड एंड सप्लाई पे. जब भी आप सैलरी को प्रोपोर्शनेट करते हो, सैलरी इज मेनली ड्राइव्ड बाय डिमांड एंड सप्लाई. अगर अगर एक चीज की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, या यानी अगर हम लोग लेट से लेते हैं एक सिटी का हम लोग एक स्मॉल टाउन का हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि वहां पे कंप्यूटर इंजीनियर की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, 10 लोगों की डिमांड है. वहां पे इतनी कंपनीज है कि जहां पे 10 लोगों की कंप्यूटर इंजीनियर की डिमांड है, लेकिन वहां पे उस टाउन में सिर्फ 2 इंजीनियर्स है, कंप्यूटर इंजीनियर्स. तो ऑटोमेटिकली सैलरी का जो रेशो है वो बढ़ जाएगा, बिकॉज सैलरी विल इंक्रीज. द डिमांड, बिकॉज द डिमांड इज हाई, सप्लाई इज लेस, सैलरी विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज. तो पाइथन की जो डिमांड है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की और पाइथन प्रोफेशनल्स की, वो डिमांड वेरी हाई है और सप्लाई वेरी कम कम है. मतलब सप्लाई इज वेरी लेस. तो सैलरी ऑटोमेटिकली उसकी जो है वो वेरी हाई सैलरीज है पाइथन के प्रोफेशनल्स की. तो हम लोग उसको भी देखेंगे कि वो किस तरह से सैलरी और डिमांड किस तरह से है. उसके बाद लर्निंग कर्व. लर्निंग कर्व इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बहुत सारे लोग यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं होंगे. बहुत सारे हमारे बच्चे जो है और जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, एक एक मेजर प्रॉब्लम मैंने जो देखा है स्टूडेंट्स में वो ये है कि दे बेसिकली ड्रॉप मैथ्स इन अर्ली स्टेज ऑफ ग्रेजुएशन और नाइन्थ के 10th के बाद या ऐसे कुछ ये लोग मैथ्स ड्रॉप करते हैं. तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में बहुत कम लोग जाते हैं, और अगर कोई कंप्यूटर में भी जाना चाहता है तो ज़्यादातर लोग बीसीए या बीसीएस इस तरह के जो कोर्सेज है वो करते हैं. इट इज़ नॉट अ कंप्यूटर इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन, बेसिकली इट इज़ अ नॉर्मल ग्रेजुएट डिग्री. तो मैथ्स ड्रॉप कर लेते हैं. तो जहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्वेश्चन है, मैथ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. मैथ्स का बहुत ज्यादा जरूरी होता है. इसीलिए
प्रोग्रामिंग को लर्न करने के लिए मैथ्स पे अच्छा ग्रिप होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसे हैं जो मैथ्स अगर वीक है तो भी सीखा जा सकता है, और पाइथन इज वन ऑफ दोज लैंग्वेज। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज वन ऑफ दोज लैंग्वेज जिसमें अगर मैथ्स आपका कमजोर है तो भी आप अच्छे से पाइथन सीख सकते हो। लर्निंग कर्व जो है वो इट इज नॉट वेरी स्टीप। तो हम लोग वो लर्निंग कर्व भी देखेंगे कि कैसे लर्निंग कर्व है, एंड व्हाट कैन यू डू विद द पाइथन। पाइथन से आप क्या कर सकते हो, पाइथन लैंग्वेज से आप क्या कर सकते हो इस वर्ल्ड में, क्या यूज केसेस है पाइथन के। दुनिया में लोगों ने पाइथन प्रोग्रामिंग यूज कर करके, बड़ी बड़ी टेक कंपनीज ने क्या 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 किया है, क्या क्या एप्लीकेशंस बनाए, क्या क्या प्रोग्राम्स बनाए, हम लोग उस पर एक एक नज़र भी वो भी मारेंगे। और कहाँ कहाँ यूज हो रहा है आज के बड़े टेक कंपनीज में, कहाँ कहाँ पाइथन यूज हो रहा है, तो हम लोग वो भी देखेंगे कि कहाँ कहाँ पाइथन यूज हो रहा है। तो एक आइडिया हो जाएगी आपको बेसिकली कि what is the demand of the Python in the big tech companies, the tech companies. I'm talking about the companies in Silicon Valley, and the majority of the startups which are starting in India. So let's see where the Python is being used there, and we will show very good examples of the big tech companies which are using Python. और लास्टली हम लोग डेमो में जाएंगे, और डेमो में हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम रन करके बताएंगे, एक छोटी सी यूज केस, नॉट नॉट द बिग डेमो। एक छोटी सी यूज केस बताएंगे हम लोग कि एक छोटा 10 से 15 लाइन का या 20 लाइन का आप पाइथन अगर कोड लिखते हो तो हम क्या क्या रन कर सकते हो पाइथन से, बेसिकली what you can do with the small 10-15 line codes. Okay, आप घर पे बैठे हो, you are working as an professional somewhere, maybe you're working as an accountant, and or you are working as a financial professional or supply chain professional. If you know the Python, even if you are network engineer or server engineer, if you know the Python programming language, your value will increase drastically. आपको जो है वो एक रिस्पेक्टफुल नजर से देखा जाएगा when you know this programming language, because many things can be automated with the Python language. And then we will see the demo, that we will demo one of the use case we'll run through, and we'll see how it works. So let's go. I hope I'm audible and मेरी आवाज क्लियर है ना सबको, और स्क्रीन भी क्लियर है ना? हाथ उठाए, मतलब नॉट फिजिकली बट रिएक्शन में। मेरी आवाज क्लियर है ना? मेरी आवाज, यस, वेरी गुड, सो इट्स क्लियर। तो आई वुड लाइक टू हैंड ओवर हियर। ओके, लेट्स गो थ्रू पाइथन। पाइथन क्या है बेसिकली? मैं फारूक से बोलूंगा कि यहाँ पे फिर से एक रन ओवर करे व्हाट इज द पाइथन लैंग्वेज, बट आई विल गिव यू ब्रीफ अबाउट इट। पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली। ये कोई सांप नहीं है। ये कोई सांप का और एनिमल से रिलेटेड कोई चीज नहीं है। डोंट वरी अबाउट इट, इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे आपने, अगर यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के कोई स्टूडेंट्स होंगे ऑलरेडी या प्रोफेशनल्स होंगे, तो वो जानते होंगे कि यूजुअली यूनिवर्सिटीज में जो हमारे इंडिया में और ग्लोबली जहाँ जो सिलेबस चलता है, ज्यादातर जावा ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाई जाती है, या डॉट नेट सिखाई जाती है। कुछ सिलेबस में पीएचपी भी सिखाई जाता है। पाइथन इज नॉट वेरी पॉपुलर इन द सिलेबस बिकॉज हमारा जो सिलेबस बना हुआ है वो बहुत ओल्ड सिलेबस है, वो चलते आ रहा है अभी भी। तो पाइथन आप देखोगे नहीं कि उसके अंदर ज्यादा ये चीज है। आप बहुत सारे दूसरे C++, सी लैंग्वेज, ये बहुत सारे हमारे हमको देखने मिलते हैं। तो इसी तरह पाइथन जो है वो स्क्रिप्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। it is basically a tool of writing a series of step by step automation rules. Like आप एक स्क्रिप्ट लिखते हो और वो स्क्रिप्ट को रन करते हो, उससे एक प्रोग्राम का आउटपुट निकलता है, और उसके साथ साथ आप वही सीरीज ऑफ स्क्रिप्ट लिखते हो और उससे एक प्रोग्राम बनाते हो, एक आउटपुट निकालते हो उससे बेसिकली। तो ये कैसे होता है, कैसे करना है इसको, ये हम लोग समझेंगे अभी फारूक से। वो बताएगा डीप डीप लेवल से।
तो व्हाई इज इट पॉपुलर, लेट्स गो के पॉपुलैरिटी क्या है। अब मेरे स्क्रीन पे देखो, ये कोई प्रेजेंटेशन में डायरेक्टली बनाया हुआ नहीं है, ये गूगल का ट्रेंड है। अगर आप खुद भी अगर गूगल ट्रेंड पे जाओगे, अगर आप गूगल ओपन करोगे और गूगल ट्रेंड टाइप करोगे, गूगल गूगल ट्रेंड एक एप्लीकेशन है जहां पे आपको पता चलता है कि कोई भी चीज के बारे में आप ट्रेंड पता कर सकते हो कि इसका ट्रेंडिंग क्या चल रहा है मार्केट में। तो मैं आपको दिखा रहा हूं मेरे स्क्रीन पे गूगल ट्रेंड लास्ट 5 इयर्स का, जो इंडिया में गूगल ट्रेंड है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, इंटरेस्ट इंटरेस्ट ओवर अ टाइम। तो आप देखें कि पाइथन लास्ट 5 इयर्स, 2016 में पाइथन वाज अ स्लोएस्ट मोस्ट और लीस्ट इंटरेस्टेड लैंग्वेज। आप देखेंगे यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, ये पाइथन का जो ब्लू कलर का जो लाइन है, ये सब में नीचे है यहाँ पे 2016 में। और ड्रास्टिकली लास्ट कपल ऑफ इयर्स में ये जो ड्रास्टिकली चला गया है ऊपर, यानी सारे दूसरे लैंग्वेज जैसे पीएचपी है, सी प्लस प्लस है, और बहुत सारे अदर प्रोग्रामिंग्स, मैंने यहाँ पे अदर प्रोग्रामिंग्स लैंग्वेज कंपैरिजन के लिए ऐड नहीं किया है, लेकिन आप खुद भी जाके ऐड कर सकते हो और वहाँ पे देख सकते हो कि पाइथन लैंग्वेज ये सब में ज्यादा डिमांडिंग लैंग्वेज है इंडिया में। और नॉट जस्ट इन इंडिया, गल्फ रीजन में, यूएस, यूके, यूरोप कंट्रीज में, जहां भी आप जाओ वहां पे पाइथन का डिमांड सब में ज्यादा है आजकल के ट्रेंड में। ओके, तो क्यों डिमांड ज्यादा है उसका? उसका डिमांड ज्यादा इसलिए है क्योंकि पाइथन प्रोफेशनल की सब में ज्यादा आजकल टेक इंडस्ट्रीज को जरूरत है। सब में ज्यादा जो इंडस्ट्रीज को जरूरत है वो पाइथन पाइथन इंजीनियर्स की जरूरत है। पाइथन से आप क्या क्या प्रोफेशनल्स बन सकते हो? आप वेब डेवलपर बन सकते हो, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो, आप डेवऑप्स इंजीनियर बन सकते हो। डेवऑप्स ये जो है ज्यादा ट्रेंडिंग प्रोफेशनल है आजकल। मशीन लर्निंग इंजीनियर, आप अगर मशीन लर्निंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंटरेस्टेड रहो तो आप मशीन लर्निंग इंजीनियर भी बन सकते हो। पाइथन मशीन लर्निंग और डेटा साइंस में बहुत ज्यादा यूज होता है, डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो आप। और ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रही है, एक एवरेज सैलरी कितनी है एनुअल वेब डेवलपर की, अगर आप देखोगे इसमें, तो एक एवरेज सैलरी है तकरीबन 30,000 पर मंथ, एवरेज सैलरी वेब डेवलपर की। और अगर आप डेटा साइंटिस्ट बनोगे तो तकरीबन एक एवरेज सैलरी 60,000 पर मंथ आपको मिलेगी डेटा साइंटिस्ट के लिए। लेकिन दिस इज जस्ट एन एवरेज सैलरी। इफ यू हैव अ टैलेंट, अगर आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ग्रास्प करने की पावर है, आप अगर एक्सपर्ट प्रोग्रामर बन सकते हो, तो ये सैलरी कैन ड्रास्टिकली इंक्रीज। आप महीने के 1.5-2 लाख रुपया इंडिया के या उससे भी ज्यादा कमा सकते हो। अगर मैं गल्फ की बात करूं, मैं यूएई में रहता हूं, दुबई में, तो यहाँ पे पाइथन की जो बेसिक सैलरीज है वो 7 से 8 हजार दिरहम्स है। यानी अगर मैं उसको कन्वर्ट कर दूं तो तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपया सैलरी है इसकी, पाइथन इंजीनियर की। आई एम टॉकिंग अबाउट द एवरेज सैलरी, बट देर आर पीपल, देर आर प्रोफेशनल्स इन पाइथन। 5 7 8 साल के बाद, 10 साल के बाद, जब आपको प्रॉपरली एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आपकी सैलरी 3 लाख 4 लाख से भी ऊपर चली जाएंगी, 5 लाख इंडियन रुपीज पर मंथ से भी ऊपर चली जाएंगी। लेकिन इसके लिए क्या करना है आपको? जिस चीज में आप वो कर रहे हो, जा रहे हो, उसमें आपको दिल लगा के उसको सीखना है, दिल लगा के आपको उससे उसके बारे में स्टडी करनी है और प्रैक्टिस करना है आपको। और one good thing about the programming language is it doesn't have to be that you need to do the job. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई भी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसका एक बेस्ट बेस्ट मतलब आउटपुट ये होता है कि अगर आप जॉब नहीं करना चाहते हो तो देर इज नो नीड, आप घर पे बैठे बैठे फ्रीलांसिंग करो। आप घर पे बैठे बैठे 20-25 हजार, 50,000, 1 लाख, आपके टैलेंट के हिसाब से आप घर बैठे बैठे कमा सकते हो। इतने मार्केट में फ्रीलांसिंग जॉब पड़े हुए हैं। आप
फ्रीलांस बहुत सारे फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स है, वहाँ से आप काम ढूंढो, काम पढ़ो, काम करके दे दो, एंड यू अर्न लॉट ऑफ मनी फ्रॉम देयर। एंड ये फ्रीलांसिंग का हमारा जो है, वो हमारा एक डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स है, उसके अंदर हम लोग एक फ्रीलांसिंग का पूरा टॉपिक कवर कर रहे हैं कि इसके अंदर फ्रीलांसिंग में कैसे हम लोग को जाना है, कैसे फ्रीलांसिंग में कवर करना है। ठीक है, तो लेट्स मूव। लर्निंग स्टैक। अगर आप 3 मंथ में कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हो, तो अभी आपके सामने ये चीजें हैं कि सब में जो इजीएस्ट लैंग्वेज है सीखने के लिए वो पाइथन है। सब में जो डिफिकल्ट लैंग्वेज है वो C++ है। अब आप आपके सामने ग्राफ है कि 3 महीने में जो आप पाइथन के स्किल लेवल्स अचीव कर सकते हो, उतने ही स्किल्स आप रूबी, जावास्क्रिप्ट, C# या C++ लैंग्वेज में नहीं ले सकते। वो जो है, उसमें सीखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ेगी। लेकिन पाइथन सीखने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। आप 3 महीने में या 4 महीने में या 6 महीने में आप अच्छे से अच्छा पाइथन स्किल सीख सकते हो, और एक मतलब प्रोफेशनल लाइफ, प्रोफेशनल करियर आपका पाइथन में स्टार्ट कर सकते हो 3 महीने में। ऑफ कोर्स दिस इज एन एवरेज, ये डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, आपका कैलिबर कितना है, आप कितनी ज्यादा मेहनत करते हो, उस पर डिपेंड करता है। तो फ्रॉम हियर आई विल गिव इट टू फारूक, जो हमारा आज का इंस्ट्रक्टर है। आई विल आस्क फारूक टू शेयर स्क्रीन and start the further discussion. So, Farooq, can you hear me? Hello, can you guys hear me? Yeah, I will stop the screen, Farooq, and you can share your screen. Okay. Okay. Hi, my name is Farooq. I'm a software engineer. I've done my bachelor's in BITS Pilani. So let me know. Can you guys hear me? Is my voice audible? Yeah, you are audible. You are audible. Can anyone message in the chat if it's not audible? Okay. Okay. Good. Okay. So just let me walk through this again. I'll go. I'll go through these slides again. So this is our agenda today. We're going to go through what is Python, क्या है Python, क्यों popular है, demand, salary, learning curve. I'll be adding a few more points. थोड़े और points डालूंगा मैं इनमें. So let's get started. So Python. So basically Python क्या है? Programming language है, सबको पता है. अब तक तो सबको पता होगा. It's a programming language. But in the base sense क्या है Python? आप समझो पाइथन की, सपोज आपको कुछ सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ. फूड, आपको खाना बनाना है, तो आपको कुछ भी आइटम बनाना है, तो आपको क्या करना है? पहले आप एक रेसिपी को फॉलो करना है ना. तो समझो वो रेसिपी जो लिखते हैं ना, जो प्रोसीजर, ये तुम्हारे प्रोग्रामिंग लाइंस रहते हैं, प्रोग्रामिंग स्टेप्स. जो कोड लिखते हैं ना, वो ये लाइंस है. तो वंस आप सही तरह से रेसिपी लिखेंगे, सही प्रोपोर्शंस डालेंगे, आपको आउटपुट आ जाएगा. आउटपुट क्या है? आपको खाना तैयार होके बन जाएगा. तो पाइथन इज ऑलमोस्ट लाइक दैट. इट इज लाइक यू आर राइटिंग सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस. रेसिपीज में इंस्ट्रक्शंस रहते हैं ना, वन बाय वन. सो यू आर राइटिंग अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, एंड once and it will give you an output. So using this sequence of instructions, आप एक output बना सकते हो, which will be related to like anything. Like I will go through them one by one. So why is it popular? Python is the one programming language in which
आप बहुत कम कम लिख के बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि लोगों ने लाइब्रेरीज बनाए हैं. लाइब्रेरीज इन द सेंस इंग्रेडिएंट्स. They have made ingredients, ready-made ingredients. You just need to put and make your dish. I mean, make your software. So I'll just go through that. So as Tabrez walked you through this is the popularity of Python. Why is it becoming popular? It's because of that. It's because of its simplicity. You can elegantly write few lines of code, which we are going to do that towards the end of the session, and we are able to extract so much out of it. But if you try to do the same thing, अगर आप ये same चीज करना चाहते हो in some other programming language, it will the number of steps, मतलब वो ingredients के steps रहते हैं ना, वो बढ़ जाते हैं. So that's why it's gaining popularity Python. And आजकल तो आप लोग तो देखे होंगे ना, 5 साल पहले फोन के 5 या 10 साल पहले फोन का मेमोरी का साइज क्या था? मेमोरी का साइज शायद 1 GB या 8 GB कुछ था. अभी देखो 1 TB तक भी मेमोरी आ रहा है, तो मेमोरी का इश्यू नहीं है. तो उसकी वजह से पाइथन की पॉपुलैरिटी भी बढ़ रही है. सो let's so learning compared to other languages. So see, in this 3-month timestamp, the number of things which you can achieve with Python, if you try to do the same thing what you're trying to do in Python with some other language, you'll not be able to do. Be able to do half or quarter of it, not everything. सही है. और so that's why Python is very famous. So this is what I'm trying to tell you. See, this is the आपको पता है Hello World program. Most of you guys may be knowing Hello World programs. If you try to compare it with some other programming languages like C or Java or C++, if you see in C, there is how many lines can you see? There are around 5-6 lines. And same thing with Java and same thing with C++. But in Python, you just need one line, just a function. Print और उसमें function में pass कर रहे हो hello world और वो output दे देगा. So it's that simple in Python when compared to other programming languages. So what all can you do with Python? So this is the point which I wanted to come across. So Python right now it is being used in many top companies from almost everywhere is being used to run in astronomy. It's being used. It's used in uh, to make websites. It's used to make used for data analysis. It is used for machine learning software. It is used for automation, web scraping. There's so many things you can use. So let's go through them one by one. We'll be doing projects based on these. So what all you can do with Python? You can run powerful web applications. आप लोग Instagram use करते होंगे. I mean, most of you must be using Instagram. So you know the backend language for Instagram is Python. It's actually Python. It's a framework called Django. With Python, you are able to create web applications also. So that's one of its application, and followed by you can fly drones. You can launch rockets with Python. It's a programming language. So the possibilities are endless over here. And using machine learning, you can it's like the self-driving cars, right? The machine learning scripts which are being used in self-driving cars for the car to learn from driving around. It is also written in Python. Okay, so then you can have you heard about Raspberry Pi? It's a small computer. You can use that to automate stuff like connect with sensors, Internet of Things, connect your device remotely. There are a lot of applications using Raspberry Pi. And the programming languages you can use behind is Python. And right now, the current place which I'm working, we are automating business processes. And the primary languages for automating business processes, we are using Python for that.
and some financial reports also we are generating using Python. Like daily we have automated, यानी कि every day हम लोग क्या करते हैं, एक पाइथन स्क्रिप्ट लिखते हैं, वो क्या करता है, वो एक पीछे एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम चलाता है, वो चला के वो बिजनेस, अभी बिजनेस के मैनेजर्स रहते हैं ना, उनको एक रिपोर्ट जाती है सुबह सुबह. इट इज ऑल, ये दिस इज ऑल वी लर्न टू डू इन दिस इन पाइथन. एंड देयर आर सो मेनी टूल्स. सो अगर सी जब आप पाइथन सीख लेंगे और आपके पास काफी अच्छा हैंडल रहेगा पाइथन में, यू जस्ट नीड अ कंपनी. आप एंटरप्रेन्योर के जैसा कोई भी कंपनी के पास जाके उनके बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं पाइथन के साथ. तो वी विल लर्न हाउ टू डू दैट. So let me go on. So see, these are the companies which are using Python uh, in their day-to-day activities. We have SpaceX. SpaceX को तो आपको, I think if you guys don't have idea of SpaceX एक company है, rocket की company, और it is founded by Elon Musk. So they are also using Python in their code base, and NASA is also using. Tesla is using Python for its autonomous driving. And Instagram तो मैंने बताया था कि it is used as a web app backend, and we will be making a web app backend, not in this session, in for future sessions. And Intel तो आपको पता होगा कि हर एक लैपटॉप कंप्यूटर का जो प्रोसेसर रहता है ना, इंटेल, वो जो कंपनी है ना, दे आर यूजिंग पाइथन टू पायलट ड्रोन्स, unidentified vehicles like that, and so many other things. So these are all the companies which are currently using Python. So we have Pinterest, Dropbox, Spotify, Google, in- all these companies, Instagram, we said, YouTube also at a point of time was using Python, Eventbrite. See, what Python, I can tell you, after learning Python, you can do so many stuff. Like suppose if you want to, you have a idea, you want to create a web application, or you want to help a business, or you want to, or in your job you would like to automate boring stuff, you can use Python to do it elegantly, and we will be showing you how to do that in future sessions. So here we have all these companies which are using Python, and these are see, there's a website called stackshare.com. stackshare.com बल्कि एक वेबसाइट है, अगर आप उधर जाएंगे तो वो बताएगा कि कौन सी कंपनीज कहाँ यूज किए हैं पाइथन. तो काफी सारे कंपनीज हैं, booking.com, Accenture, Dropbox. So let's go through one by one company and how Python is actually being used there. So NASA, National Space Agency जो है US का, it is using Python for their workflow automation system. तो क्या होता है अक्सर, नासा जैसे बड़ी कंपनी है ना, तो ये जो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, it will give a contract to smaller companies, okay, to develop applications. But to manage the application, NASA has developed their own workflow automation system, which is designed to integrate जो भी applications ये third parties से बनाते हैं ना, वो integrate करते हैं. तो उस लिहाज से पाइथन इधर इस्तेमाल हो रहा है. और स्पॉटिफाई, जो भी आप स्पॉटिफाई तो आप लोग पता है कि आप गाने सुनने या और पॉडकास्ट सुनने या कुछ सॉन्ग्स वगैरह सुनने के लिए आप स्पॉटिफाई यूज करते हो. मगर स्पॉटिफाई का आपने नोटिस किया होगा, वो रिकमेंड करता है पीछे, क्या रिकमेंड करता है, सॉन्ग्स रिकमेंड करता है. जो सॉन्ग्स जो रिकमेंड करता है उसके पीछे जो लॉजिक लिखा है वो पाइथन में लिखा हुआ है. वो कैसा लिखा हुआ है वो हम लोग बताएंगे फ्यूचर सेशन में. तो ये स्पॉटिफाई क्या करता है, जो डेटा कलेक्ट करता है ना यूजर, जैसे यूजर आता है कोई सॉन्ग पे क्लिक करता है, तो वो सॉन्ग क्या, कौन सा सॉन्ग सुना है यूजर ने, कब प्ले किया है, उस कौन से दिन पे प्ले किया है, कौन से महीने में प्ले किया है, कौन सा सॉन्ग ज्यादा प्ले किया है, कौन सा
सॉन्ग कम प्ले किया, ये सब यूजर एक्टिविटी एक डेटा कलेक्ट करते हैं स्पॉटिफाई लोग, स्पॉटिफाई कंपनी. सो व्हाट दे डू इन देन, दे प्रोसेस द डेटा. वो डेटा साइंस अप्लाई करते हैं, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स अप्लाई करते हैं इन डेटा पे यूजिंग पाइथन, which will allow them to recommend users better. See, अगर अगर कोई आपको रिकमेंड करता है कुछ कुछ सॉन्ग, अगर आपको रिकमेंडेशन पसंद नहीं आएंगे, नहीं आते हैं, तो आप वापस दोबारा उनके पास जाओगे रिकमेंडेशन के लिए? मैं तो नहीं जाऊंगा. तो सिमिलरली ये प्रोग्रामेटिकली वो अचीव कर रहे हैं स्पॉटिफाई. So Netflix also is in similar vein. In Netflix also अभी जैसे Spotify म्यूजिक के लिए कर रहा है, Netflix भी कर रहा है for analysis of what users are watching. आपको पता है Netflix में आप लोग टीवी शोज वगैरह देखते होंगे, तो वो वो जो भी डेटा कलेक्ट कर रहा है कि कौन क्या देख रहा है, वो उसके ऊपर एनालिसिस कर रहा है. क्या एनालिसिस कर रहा है? वो जो पीछे जो लैंग्वेज जो यूज हो रही है वो पाइथन यूज हो रही है. और यहाँ अभी उबर कंपनी तो आप सबको पता है कि उबर वेरी, तो इसका जो बैकएंड जो इंजीनियर्स जो बनाए हैं ना उबर, दे आर यूजिंग पाइथन along with other languages. Node. See, any organization you go, like especially big organization like Uber, Netflix and all, they'll have huge teams. बहुत बड़ी टीम रहती है उनके पास. They'll be having different departments using different languages. So here in Uber, Python is also one of their languages, along with Node.js, Go, and Java. But Python is like a glue language. Glue means I'll tell you. Glue in the what is Python slide? You might have heard like Python is a scripting language. Scripting language मतलब क्या है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मतलब ग्लू लैंग्वेज. आपको कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स बने रहते हैं, तो उनको सब सिस्टम्स को कंबाइन करना वो पाइथन करता है. और वो कैसे करते हैं हम लोग ये कोर्स में बताएंगे. Guys, you guys can hear me, right? I just want to know, can you guys message? Yeah, we can hear you. Yeah. तो अभी देखो, फिर ड्रॉपबॉक्स है. ड्रॉपबॉक्स क्या है? एक फाइल स्टोरेज सिस्टम है, ठीक है. तो उन्होंने पहले जब शुरू किया था, उन्होंने उनका ये जो एप्लीकेशन ड्रॉपबॉक्स से बनाया था, वो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे सी प्लस प्लस में बनाया था. तो उन्होंने क्या किया, एक पाइथन का एक ओपन सोर्स वर्जन लेके उन्होंने सेम परफॉर्मेंस अचीव किया पाइथन में. ये बताने के लिए कि पाइथन इतना फास्ट भी है, अगर बराबर से करेंगे ना, बराबर पैटर्न वगैरह फॉलो करेंगे, तो आप सेम परफॉर्मेंस जो सी प्लस प्लस जावा में है वो पाइथन में भी अचीव कर सकते हैं एप्लीकेशंस के लिए. तो वो ड्रॉपबॉक्स वैसा यूज कर रहा है पाइथन. रेडिट वेबसाइट, एक रेडिट मतलब आपने रेडिट मतलब आप रीड कर चुके हो. तो रेडिट एक वेबसाइट है, सोशल वेबसाइट. वो यूज हो रहा है फॉर लाइक एनी लिंक, कोई न्यूज आती है या कुछ डिस्कशन करना है टॉपिक में, तो ये डिस्कशन करने के लिए रेडिट वेबसाइट अगर आप जाओगे reddit.com पे, वो जो भी अभी पॉपुलर चल रहा है, ट्रेंडिंग चल रहा है, उसके ऊपर डिस्कशन होती है. तो इसलिए ये बोलते हैं फ्रंट पेज है रेडिट का, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज, सॉरी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आके डिस्कस करते हैं. ये एक फॉर्म की तरह है जहाँ अच्छी खासी डिस्कशन होती है. तो पाइथन वैसा करता है. तो ये रहा. So these are the companies which are currently using Python. So these are the structure of the classes. So this is regarding the course of the Python. We'll have the first 10 classes in which we'll be going through the basics of Python. What are the
what are numbers, variables, strings, lists क्या है, iteration, conditionals, ये सब आपको डिटेल में फर्स्ट 10 क्लासेस में आप ये सब सीखेंगे और the rest of the classes are projects. So once you guys build up all your basics, then we'll move on to the projects. So I'll be talking about the projects. Okay, before projects, let me demonstrate you how I'll be using Python to scrap Instagram data. So just give me a moment. हेलो। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है इन बिटवीन तो यहाँ पे, जैसे मैंने सेशन के स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे क्वेश्चन आंसर सेशन है। जो क्वेश्चन आंसर सेशन है उसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो, Q&A करके आपको मेन्यू है। पोल्स के बाजू में Q&A करके एक मेन्यू है, उसके अंदर आप क्वेश्चंस आपके पूछ सकते हो। तो हम लोग सेशन के बाद उनको आंसर करेंगे। ठीक है, अगर किसी को क्वेश्चन है तो वहाँ पे हम लोग आप लोग वहाँ पे आपके क्वेश्चंस टाइप कर सकते हो। So guys, you can use that question answer section for asking any of your doubts. Okay, so right now I'm using my laptop is Windows laptop, so I'm using this this folder I have over here with me. I have a file in it called insta.py. So I have opened it in Notepad. I have made the extension as py. ये extension इसका py है, ठीक है? तो मैं ये edit कर रहा हूँ file और इसमें मैं simple सा program लिखता हूँ. So what this program does is it will fetch data from Instagram, the basic data, username, number of followers, bio. So just let me get started. So for this program, we have a prerequisite. We are using a module called instaloader. Using instaloader, we can, within few lines of code or within like couple of lines, we'll fetch the data. So let me get started. So first I'll import the library. Okay, so this line, this is an import statement. It will import the library. Now this is a bot. So I'm defining a bot variable here, and I'm instantiating the instaloader class. Okay, so right now I'll be scrapping the Instagram account of Konkan Virtual University. So I need to store it somewhere. So I'll store it in this profile variable. So whatever I'm typing right now, don't be worried. We'll be explaining everything from basic. This is the programming steps. We have a function called from username, and over there we are passing the worker over here, which is the bot, to go and fetch the details of Konkan University website. Okay, so Konkan Virtual
So I'm going to print the user ID. The number of Instagram posts they have made. The number of followers. And finally, the bio. Okay, so I'm going to save the file. Just write a input. So right now I've directly jumped into the programming part. So don't worry, we'll be learning how to open this file, install Python and everything in the introductory session. So, so right now I have written the program. So Konkan, all if Konkan University virtual university details will appear on the screen right now. Hold on. There's a typo here. The extra TOA. See, as you can see on the screen right now, in a Python program, it has fetched the details of the Konkan Virtual University website, the number of posts, the user ID, the bio data, within how many lines? Within 10 to 15 lines of code. So Uh, yeah, any of our audience attendees, if you want to give your Instagram ID, we can put that in the instead of Konkan Virtual University, and we can see what are your. You can post in the chat if you want to bring the data from your Instagram ID. what I'm doing right now is I'm modifying the program slightly so I can take the input from the command prompt. Okay. So let's see. So this is the account name. Okay, there is one Instagram ID. Farooq, can you test that? Can you Yeah, use that? we'll be using this Instagram ID. Thank you, Anas. We'll be using your ID and even Nishant. Okay, so I'll run the program again.
So right now, this is a program I've written for Konkan University, but I've slightly tweaked it. Now right now I'm asking for the input so I can fetch the details of the Instagram. So let me run the program. See, it's now asking for Instagram account. So I have copied the program. So I'm pasting the user account. So I hope this is correct. So let us check. Okay, it is asking for login session. It is saying case username is invalid. Let me see. Maybe just the I think the capital letter J is causing the issue. Let me just check. So is there an Instagram account? Is the ID correct? Just let me check. And make sure your profile is not private. It should be public. Okay, this is a public account. Okay. Okay, what I'll do is I'll just close this and create a new session. What Instagram does sometimes is that when you open the page, right, it will ask you to log in. So it is asking for the login right now. Okay, let me try some other ID. Okay. Okay, see, so Instagram has a limit for the number of times you can use their API. So right now, see, we tried for Konkan Virtual University. First time it came, but again we are trying right now. It's not coming. It's giving an error because, and it is as you can see the error message. It's saying it's redirected to login page. So what happens is, see, I can demonstrate to you on the web browser. See, right now I open this page. Okay, I scroll, then I go to some other web page.
or some other web page. Okay, so what happens is Instagram will ask for login. See, it's starting to ask for login. Now let me try to go back to uh, this page. See, see, this is what happens. Actually, the script we wrote is a web scraping script. It goes through the website and it will get the login. So right now, if I try to access this page, it's asking for login. So this is what is happening right now. So that's why the data is not coming. So if you try again later, after some time, after like 1 hour, it will come. The data will come. So this was a script. We can I'll share you the script in the chat window so that you guys whoever has Python installed on the system can play around with it. Okay, so let me go back to the session. Okay. So right now, as you saw, we just wrote a small program which fetch the details of the user's Instagram account. So this is a small example of what Python can do. There are many more examples which we'll be covering in the course. So as I said, so these are the structure of the classes. The first classes start from the basics of Python, like what are the basic building blocks you need to learn in order to do the projects. So these all will be covered in the first 10 classes. Then will be thorough sessions. You'll be a lot. You'll be given time to practice and ask doubts before we move on to the other classes which are project based. So what kind of projects you guys can expect doing in this course? So web scraping. So any website you visit, it has data, but what if we want to extract that data? It's like some particular chunks of data. So to achieve that, we have a library in Python which will simplify the process of getting that data. तो एक लाइब्रेरी है पाइथन में ब्यूटीफुल सूप नाम है उसके लाइब्रेरी का तो we can use that library to go to the website and get that data on a daily basis, and on that data if you want to send email or if you want to uh, call a payment gateway or if you want to do some any kind of automation आपको करना है तो you can achieve using we'll be doing that in this. So web scraping, so we'll be learning the basics. We'll be parsing the data from websites that don't provide API. जैसे कि इंस्टाग्राम था, उन्होंने अलाउ किया था थोड़ी देर, फिर वापस लॉगिन पे आ गए वो. तो we'll be learning how to bypass that also. And see, this is a simple website, transfermarket.com. It contains the क्या बोलते हैं, details of the professional football players. So in that we have a particular player over here. We have his career stats. We'll be learning how to extract this data into a Excel spreadsheet file. So this is one of the projects. And the next project we have is a REST API service. So REST APIs is a representative state transfer API. Basically, it's a standard gateway of how programs communicate with each other. So you have programs written by different companies or services. They often follow this format. वो एक type of क्या क्या बोलते हैं? They follow a method or a standardized method of sending and receiving data. So it is called REST. So we will be creating a program that talks to other services or other programs. Then the next project is we'll be writing a simple program that will automate the video editing process. The name of the library over here is MoviePy. So
with using this library, we'll be joining videos together, we'll be adding text over them, and we'll be automating the process of editing videos using Python scripts. Then we have suppose if you want to do scraping, but you don't want to go like right now. Wrote this script to get the data of Instagram, but you don't want to do it. Come over here, computer पे आके ये script चला के to retrieve the data. You want to do it automated in the background. आप बस script लिख दें कि it will. You want it to run the script every night at 4 o'clock जाके कुछ data लेके आना है तो you can use Selenium for this. So we will be scraping and automating behind password protected apps. Suppose आपको डेटा लेके आना है Instagram अकाउंट में, मगर आपको लॉगिन भी करना है, तो हम लोग एक सेलेनियम स्क्रिप्ट लिखेंगे जो कि क्या करता है, वो लॉगिन खुद ब खुद करता है आपके क्रेडेंशियल से, और वो जाके डेटा लेके आके कोई एक्सेल फाइल में डाल देता है या कुछ ईमेल देता है, भेज देता है. सो विल बी कवरिंग दैट इन दिस प्रोजेक्ट. So the next project we have is we'll be learning data science. We'll be doing a basic data science pipeline. तो पाइथन में 3 मशहूर लाइब्रेरीज है. एक जुपिटर है. जुपिटर एक्चुअली एक टूल है टू सेव आपके जो भी पाइथन रिलेटेड कोड रहता है ना. जैसे आप सपोज मैंने वो फूड का एग्जांपल दिया था, तो फूड के लिए आप रेसिपीज रहते हैं ना, आपके फेवरेट रेसिपीज आप क्या करते हो, कहीं कलेक्शन उठा के रखते हो फोन में, या कोई अगर आप लोगों ने लिख लिया है रेसिपी, तो वो लिखा हुआ रेसिपी आप किसी जगह पे उठा के रखते हो. तो जुपिटर वही है. आप जो भी पाइथन रिलेटेड कोड लिखते हैं ना, वो एक पर्टिकुलर जगह में रखते हैं. तो विल बी गोइंग थ्रू दैट टूल पांडास. तो जो भी डेटा है ना, जो एक्सेल में आता है, जो आप रीड कर सकते हैं या वेब पे आता है, आप ये एक पावरफुल लाइब्रेरी है pandas. यू कैन यूज दैट टू मैनिपुलेट डेटा. लाइक आपको सपोज आपको कोई वेबसाइट से एक एक्सेल डाउनलोड करनी है, और वो एक्सेल डाउनलोड करके आपको एक पिवट टेबल में एक रिपोर्ट बना के किसी मेल में भेजना है. यू कैन अचीव दैट quickly using pandas, and we'll show you that how to do that in this course. And fast API, if आपने अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको APIs के बारे में बता रहा था. Fast API एक लाइब्रेरी है which will help you to quickly write APIs. Compared to other languages, you just need few lines of code to send a API or retrieve a API. So we'll be demonstrating that in this project. Moving on to the next project. So Spotify, हमने Spotify के बारे में थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ये मशहूर दुनिया का सबसे मशहूर ऐप है, जो आप उसमें पॉडकास्ट सॉन्ग वगैरह आप लिसन कर सकते हैं. तो उन्होंने एपीआई प्रोवाइड किए. सो भी एपीआई मतलब आप अभी रेस्ट एपीआई के बारे में मैं बात कर रहा था. तो रेस्ट एपीआई क्या है? इट्स जस्ट अ स्टैंडर्ड वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विद क्या क्या कम्युनिकेटिंग व्हाट आर एप्स. आप जो भी एप्लीकेशन बनाएंगे ना पाइथन में, it will talk with the Spotify API and retrieve data. So in this project, we'll be learning how to use the Spotify API. Now, फिर ये एक एडवांस प्रोजेक्ट है. गूगल मैप्स है ना, आप लोग डेली बेसिस पे यूज करते होगे टू गो टू अ पर्टिकुलर लोकेशन और अ रेस्टोरेंट और अ प्लेस, और टू navigate through this busy road. So with Google Maps, we'll be using their geocoding and places API to for our application to create a simple dashboard, and we'll have a use case that will go through it. Okay. So moving on to the next project, we have Twitter API with TweePy. Actually, this is not TweePy. This is TweePy. Pi यानी कि Python. तो ट्विटर एपीआई, आपको ट्विटर पता होगा, यूजर्स मशहूर प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे यूजर्स यूज करते हैं टू
to basically discuss about the trending stuff in worldly matters. So we'll be using Twitter API to scrap tweets from the twitter.com easily, and based on that we will do sentiment analysis of users. वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं current एक particular region में. That will be covered in this project. Then again we have a scrapping project. So आपको Stack Overflow, most of you guys might be hearing it first time. This is our number one go-to website for all programmers out there. तो कुछ इश्यू आ गया तो आपको कुछ रिजॉल्व करना है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द मेन वेबसाइट लोग जो जाते हैं तो वो है स्टैक ओवरफ्लो. तो ये वेबसाइट में आपके जो भी क्वेरीज है, जो कहीं भी आप अटक गए हैं, तो आप ये वेबसाइट में जाके आप इजीली आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे. सो यू डोंट हैव टू bother wasting your time for coming up with your own solution. You can use existing solution. So Stack Overflow helps in this regard. So then we'll go do another project by creating our own command line tool. मतलब आप लोगों ने विंडोज में टर्मिनल, अगर किसी ने अभी मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया था ना एप्लीकेशन, ये टर्मिनल है, ठीक है. मैं एक सेकेंड. तो ये क्या है, ये कमांड लाइन टूल है. आप इधर कमांड्स डालते हो, वो उसके हिसाब से एक आउटपुट देगा. तो हम क्या करेंगे, ऐसा एक टूल बनाएंगे यूजिंग पाइथन. So I will show you how we can create that. Then we have another project of suppose you scrap data from website. Now you want to, based on the data, you want to send alert using SMS. So you can do that using Twilio library. We'll be doing a project on that. And finally, we can create web applications. Usually Python में क्या है, if you want to create web applications, we use standard frameworks like Django, Flask, Fast API. But अक्सर क्या होता है कि ये frameworks में थोड़ा learning curve है. So what we do is we can go around that and quickly create our own framework with Python by using simple lines of code. So we'll be demonstrating that in this project. I think we have already covered this Stack Overflow wala. And finally, ये major project है, which will be creating a fully fledged web application with a complete login authentication system. This is a lead management system where you'll have two screens. One screen is to add a lead, and second screen you'll have to manage the lead. So we'll be creating that, and in this we'll be doing automations like sending SMS, tracking lead changes, assigning lead to a particular employees. So this all will be covered in this major project. So this is the end of the today's session. I'll be handing over to Tabriz to take over. Thank you, Farooq, for this Python session. Thank you. It was wonderful. I hope everybody has enjoyed it. It was a little bit delayed and it was a little bit lengthy, but I hope that it was worthwhile. यानी बहुत सारी नॉलेज आपको मिली होगी इससे और बहुत सारे चीजें आपने नए सीखे होंगे इससे. तो लेट्स हैव अ क्वेश्चन आंसर सेशन. लाइक अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है किसी का, तो आप रेस कर सकते हो हैंड आपका, और आप ये कर सकते हो. फारूक, यू कैन स्टॉप शेयरिंग योर स्क्रीन. Okay. किसी को क्वेश्चन आंसर पूछना है तो आप बस हैंड रेस करें. You can use the chat if you want to ask through the chat also. I'll be quick reply over there as well. Yes.
क्वेश्चन आंसर का सेक्शन है, उसके आप वहाँ पे आप क्वेश्चन आपके पूछ सकते हो, या किसी को अगर क्वेश्चन पूछना है यहाँ पे, तो यहाँ पे पूछ लो, हैंड रेस करके आप पूछ लो क्वेश्चंस। एनीवन? कोई क्वेश्चन है? आयशा, अहमद, अनस, हुमेरा, इरशाद, मारिया, मोहम्मद, मुजम्मिल, निशांत? I think most of the people, because the session was uh, too much delayed, it was lengthy, so maybe people, a couple of guys left already. किसी का क्वेश्चन है? किसी को कुछ पूछना है? किसी को कोई डाउट है पाइथन के रिलेटेड, या इन जनरल कोई अगर क्वेश्चन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रिलेटेड, तो अभी पूछ सकता है अपना हैंड रेस करके। ठीक है। के एक क्वेश्चन, हाँ। Yeah. Can you, Farooq, can you take one question one by one? Meanwhile, guys, I will launch one final poll. Final poll मैं launch कर रहा हूँ. Just need a feedback from you, all of you, about this workshop. तो प्लीज आप आंसर करें इसको. मैं आई लॉन्च वन सेशन. Meanwhile, Farooq, you can answer. Yes, yes. So I can see a few questions on the Q&A section. There's one question from Nazir. So पाइथन के लिए उसका कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन लगेगा या नोटपैड पर ही जाएंगे? सी जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस मैंने नोटपैड यूज किया है. वी डू नॉट यूज दैट. वी विल बी यूजिंग विजुअल स्टूडियो कोड. आई कैन क्विकली शो दैट टू यू. Most of our sessions will be using Visual Studio Code. We'll be learning how to use it. Take a second. तो ये Microsoft का एक Visual Studio है. So we'll be using this to do our applications. So we'll have a brief session on how you can use this tool effectively. I'll show you some tricks, some shortcuts, which will help you make your life easier while writing code. So yeah, so we will not be using, हम लोग नोटपैड प्लस प्लस यूज नहीं करेंगे पाइथन लिखने के लिए ऑब्वियसली. तो ये हो गया. पाइथन का कोर्स आप 12th के बाद भी शुरू कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है. ग्रेजुएशन के बाद करेंगे तो आप सी पाइथन एक यू लर्न द बेसिक्स के बाद भी आप द एक्सपीरियंस विच मैटर्स. जैसे आप कुछ एक प्रॉब्लम टैकल करेंगे टू कम अप विद एलिगेंट सोल्यूशन, आपको एक्सपीरियंस मिलेगी. So you'll learn best practices. So that will be only possible if you start from the very beginning. As soon as you are interested and if you start learning the course, you'll uh, you'll learn more. You should not like wait until graduation के बाद करूँगा या बाद में देख लूँगा. If you are interested in Python, if you want to learn programming, if you want to uh, do thank you. If you want to make complex applications, so to make applications, you will come across different challenges. That will be only possible if you learn the basics and start doing projects.
So yes, this course is a project based course. It's not academic course. You'll not be learning how to do in detail theory level stuff. We'll be doing practical stuff in this course. So what I recommend is, if you are interested, if you want to learn Python, if you want to build applications, if you want to help businesses automate their processes, you'll be learning. You'll be start. It's better if you start 12th के बाद भी कर सकते हैं, because Python का learning curve कम है. So yes. ओके, आई थिंक हम लोग ने ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं. तो अगर किसी को अगर पाइथन का कोर्स को इनरोल करना है तो प्लीज़ यहाँ पे मुझसे कांटेक्ट करें या हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उस पे कांटेक्ट करें. वहाँ पे हम लोग पूरी डिटेल देंगे. बेसिकली कोर्स का ड्यूरेशन 3 मंथ्स का रहेगा और 3 मंथ्स के बाद हम लोग 2 मंथ्स इंटर्नशिप भी दे रहे हैं कोर्स के लिए. और वी आर हैवीली डिस्काउंटिंग द कोर्स, लाइक हम लोग 60% डिस्काउंट दे रहे हैं इनिशियल लॉन्च पे. तो अगर किसी को 60% डिस्काउंट अवेल करना है, ये मार्केट में जितनी वैल्यू है कोर्स की उससे 60% हम लोग ज़्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं. और ये जो कोर्स है ये जो कोर्स है, ये जो नॉर्मल जो लेक्चरर्स है, जो एकेडमिक लेक्चर्स है, उस उनके थ्रू नहीं सिखाया जाएगा. ये कोर्स सिखाया जाएगा फारूक सिखाएगा और हम दूसरे लोग हैं जो एक्चुअल रियल वर्ल्ड में किसी कंपनी में सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है. तो उनको उनके जरिए ये कोर्स सिखाया जाएगा. तो इट विल बी लाइक कंप्लीट सब्जेक्ट सब्जेक्टिव कोर्स, यानी कोई ऐसा नॉर्मल कोर्स नहीं रहेगा. ये पूरा के पूरा कोर्स जो है वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, इंडस्ट्री एक्सपर्ट के जरिए सिखाया जाएगा. तो अगर इसका फायदा उठाना चाहते हैं आप तो फायदा उठा ले. मैं व्हाट्सएप में अपनी लिंक पेस्ट कर रहा हूं. अगर किसी को हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है कोकन वर्चुअल यूनिवर्सिटी का, तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर ले. और जिनको भी ये कोर्स को इनरोल करना है वो अपना ईमेल एड्रेस और फोन नंबर यहाँ पे छोड़ दे या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पे अब हमको मैसेज कर दे एडमिन को. तो वहाँ पे हम लोग आपको वो करेंगे. आप बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है हम लोग वहाँ पे आपको देंगे. बेसिकली ये टोटल 5 मंथ का एंगेजमेंट रहेगा और 5 महीने के बाद वी आर गारंटिंग दैट आपको नॉर्मल जो आप इंस्टीट्यूट में सीखते हो उससे कहीं ज्यादा यहाँ पे सिखाया जाएगा. ठीक है, तो आप अपना ईमेल एड्रेस और आपका टेलीफोन नंबर छोड़ दें. और आप अगर वो अभी नहीं छोड़ना चाहते तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर ले, वहाँ पे एडमिन में कांटेक्ट करें. तो वी विल गेट इन टच विद यू फॉर फर्दर कोर्स. तो वी आर लॉन्चिंग दिस कोर्स वेरी सून. अगर जितना जल्दी हो सके आप वो कर ले, जो इनरोल कर ले. और ये जो 60% की जो ऑफर चल रही है वो जल्दी से जल्दी अवेल कर ले. And thank you very much for attending. Congratulations everyone to complete this entire session. Let's hope we take this opportunity to get some good engineers out of you. Okay, thank you very much. अगर दूसरा कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे पर्सनली या व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दें तो फिर हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. Thank you guys for attending the session. Thank you. Thank you. Thank you.